Hello dear students, so today in this video I am going to explain you history of novel, that is part 1. In part 2 I will discuss novella and elements of novel. In part 3 I will discuss the different types of novels. So let's get started. So the 18th century gifted two new forms. First is periodical essay and second is novel. Now let's see the definition of novel. So novel is relatively a long narrative fiction. It describes intimate human experiences and it is written in prose form. नॉवेल जो है एक लॉन्ग नरेटिव फिक्शन होता है और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस को दर्शाता है और ये एक प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है. दो फॉर्म्स होते हैं, एक पोइट्री होता है और एक प्रोज. तो ये प्रोज फॉर्म में लिखा जाता है. नाउ लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ नॉवेल. तो वो नॉवेल वर्ड कहाँ से आया है? तो इट डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड नोवेला मीनिंग न्यू. नॉवेल जो है वो इटालियन वर्ड नोवेला से आया है जिसका मतलब होता है न्यू. नॉवेल नरेट्स अ स्टोरी विथ मोर डिटेल्स ऑफ टाइम, प्लेस, नेचर, पीपल एंड देयर माइंड्स, देयर जेस्चर्स एंड एक्टिविटीज़. ये सारी चीज़ें नॉवेल दर्शाता है. नॉवेल क्रिएट्स द पिक्चर ऑफ द सोसाइटी ऑफ दैट टाइम. जिस भी टाइम पे, जिस भी पीरियड में, जिस भी सेंचुरी में नॉवेल लिखा जा रहा है वो उस सोसाइटी की पिक्चर को दर्शाता है. जो भी सिचुएशन वहाँ पे है उसको दर्शाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी आज के टाइम पे अगर कोई नॉवेल लिखी गई तो वो कोरोना वायरस पेंडेमिक के बारे में बताएगा. आज से कई साल बाद अगर कोई इसको पढ़ता है तो वो नॉवेल आज की सिचुएशन को, आज की पिक्चर को हमें बताएगा. नॉवेल मेक्स लाइफ ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन इन ड्रामा एंड पोइट्री. इट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ 2000 ईयर्स. अभी का नहीं है नॉवेल, नॉवेल की हिस्ट्री है 2000 ईयर्स पहले. अब कुछ पहले के नॉवेल्स हम देखते हैं. अर्ली प्रिकर्सर्स आर अ कलेक्शन ऑफ टेल्स नोन एज ग्रीक रोमांसेस, वर्जिल्स इक्लॉग्स, थॉमस मैलरेस मॉर्टे द अर्थर, जेफरी चॉसर्स द कैंटरबरी टेल्स. कुछ पुराने नॉवेल्स के नाम है ये. दुनिया का पहला नॉवेल कौन सा था? विच इज़ वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉवेल? सो द फर्स्ट वन नॉवेल इज़ द टेल ऑफ जेंजी. द टेल ऑफ जेंजी फर्स्ट नॉवेल था एंड इट वॉज रिटन बाय मुरासाकी शिकुबो. तो मुरासाकी शिकुबो का लिखा हुआ पहला नॉवेल था. बट यूरोपियन फर्स्ट नॉवेल कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल? तो इट वॉज डॉन कियोटे. डॉन कियोटे फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल था जिसको लिखा था सर्वेंटिस ने. नाउ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नॉवेल. सो देयर आर 5 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ नॉवेल. नॉवेल को बढ़ावा क्यों मिला? कौन कौन से ऐसे घटक थे जो रिस्पॉन्सिबल थे नॉवेल को बढ़ावा देने में? तो 5 इम्पॉर्टेंट घटक मैंने यहाँ पे निकाले हैं. तो फर्स्ट वन इज़ अपीयरेंस ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स. न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स शुरू हो चुके थे उस सेंचुरी में. देन राइज ऑफ रियलिज़म. राइज ऑफ रियलिज़म का मतलब है लोग जो है वो रियलिटी को पसंद करने लगे थे. The 18th century new literature was characterized by the spirit of realism and denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination. डिक्लाइन ऑफ ड्रामा. ड्रामा बहुत कम पढ़ने लगे थे लोग, इसलिए उसका डिक्लाइन हुआ, वो ख़त्म होने लगा. राइज ऑफ मिडिल क्लास. मिडिल क्लास लोग बढ़ने लगे. एक्चुअली अ क्लास ऑफ पीपल हैड इमर्ज टू ऑक्यूपाई एन एलीट स्टेटस. क्यों ऐसा होने लगा? बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ मशीन्स. मशीन्स आने लगी, एक इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ एंड इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विथ the industrial revolution had given rise to the middle class people. A class of people had emerged. Then last one is role of women novelists. They played a very important role in the rise of novels. Moving on to the next. So here are some important novels. John Bunyan's The Pilgrim's Progress, Aphra Behn's Orinoco, Daniel Defoe's Robinson Crusoe and Moll Flanders, Jonathan Swift's Gulliver's Travels. It was a satire. तो ये कुछ राइटर्स के नाम हैं और ये उनकी नॉवेल्स के नाम हैं.
Now let's see major novelists of 18th century. So here are some major novelists of 18th century. First one is Samuel Richardson's Pamela and Virtue Rewarded and Clarissa. These are epistolary novels. सैमुअल रिचर्डसन का नावल है पैमेला, उसी का नाम है वर्च्यू रिवॉर्डेड, और दूसरा नावल है क्लैरिसा. एपिस्टोलरी नॉवेल्स है ये दोनों भी. हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न एंड टोबियस स्मॉलेट आर सम मेजर नॉवेलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी. चार्ल्स डिकन्स, वॉल्टर स्कॉट, नेथनियल हॉथॉर्न, होरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस एंड एच.जी. वेल्स. अब इस पर आपको क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ सकते हैं कि ऑड वन आउट. आपको 18th सेंचुरी के कुछ नॉवेलिस्ट के नाम दिए जाएंगे और उसमें एक ऑड नेम दिया जाएगा किसी भी ऑथर का. सपोज़ वो 19th सेंचुरी से हो तो आपको पहचानते आना चाहिए कि कौन सा 18th सेंचुरी का नॉवेलिस्ट है और कौन सा 19th सेंचुरी का. सो सम मेजर नॉवेलिस्ट ऑफ 19th सेंचुरी. 19th century is marked by modern topics and innovative styles and techniques. Some major important novelists of 19th century are E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding, and Anthony Burgess. There are three important immigrant authors: Salman Rushdie, V.S. Naipaul, Kazuo Ishiguro. Some women novelists are फ्रांसिस बर्नी एंड रेडक्लिफ. सो फ्रांसिस बर्नी का जो नावल है एवलिना, इट इज़ कॉल्ड द नावल ऑफ मैनर्स. एंड रेडक्लिफ्स गॉथिक्स नावल, एंड रेडक्लिफ इज़ फेमस फॉर गॉथिक नावल्स. मैरी शेलीज फ्रैंकेस्टीन, इट इज़ बेस्ड ऑन साइंस. जेन ऑस्टन्स द प्राइड एंड प्रेजुडिस. एमिली ब्रॉन्टेज द वदरिंग हाइट्स. चार्लोट ब्रॉन्टेज जेन आयर. मैरी एन इवांस और जॉर्ज इलियट्स. George Eliot is famous for psychological novels. Virginia Woolf is the pioneer of stream of consciousness technique. Agatha Christie is famous for crime novels. Some other women novelists are Harper Lee, Margaret Atwood, Toni Morrison, and Alice Walker. Let's see some Indian novelists. So first Indian novel in English is Bankim Chandra Chattopadhyay's Raj Mohan's Wife, and it is serialized in the Indian field. Mulk Rajanand, R.K. Narayan, and Raja Rao are some famous Indian novelists. Then Anita Desai, Nayanthara Sehgal, Arun Joshi, and Manohar Malgonkar are also famous Indian novelists. Amitav Ghosh, Vikram Seth, Upamanyu Chatterjee, they added some new features in Indian novels. Salman Rushdie, Arvind Adiga, Arundhati Roy, Kiran Desai, and Kiran Nagarkar are famous Indian novelists. Moving on to activity-based questions. So you will have any 2 questions from this particular lesson. Let's see the question. So match the column. Murasaki Shikubo wrote Tale of Genji, Novella. Novella means new. Don Quixote is written by Cervantes. Raj Mohan's Wife is written by Bankim Chandra Chattopadhyay. Complete the following statement. एक स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, इसको आपको कंप्लीट करना है. तो द स्टेटमेंट इज इन द 18th century मिडिल क्लास कुड गेट द टाइम फॉर रीडिंग एंड डिस्कसिंग द नॉवेल्स. 18th सेंचुरी में मिडिल क्लास लोगों को पढ़ने का और नॉवेल को डिस्कस करने का टाइम मिला. क्यों मिला? बिकॉज क्योंकि द स्प्रेड ऑफ मशीन्स के स्प्रेड से उनको टाइम मिला. पिक आउट द ऑड एलिमेंट फ्रॉम द ग्रुप. अरुण जोशी, विक्रम सेठ, किरण नागरकर आर इंडियन नॉवेलिस्ट एंड ग्राहम ग्रीन इज इंग्लिश नॉवेलिस्ट. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ओरिजिन ऑफ द नॉवेल, स्टाइल ऑफ द नॉवेल. So thank you so much for watching this video. In the next video, History of Novel Part 2, I will discuss novella and elements of novel. Stay home, stay safe. Thank you.